Narayan, also known as Lax, reporting to you all at. So looks like I think there was a session sometime back which I missed, unfortunately, the yoga session. So maybe back-to-back session makes it a little difficult for people to come back in action. But well, this is of course no stretch, no exercising. It's just that it's a chat session, so we all can continue without much hassles. So let me welcome all of you. Uh, I I am seeing Umesh ji. I think seems to be a new face. I'm not sure if I've seen him earlier. Rest of the people are quite familiar to me. I think Asha Rawal ji also is new for us. So welcome the newcomers as well as the existing members who have been part of this session. Thank you very much for being there. So the benefit of newcomers, I must state certain things. So first and foremost, I would like to thank seniors today for creating a platform and an opportunity for all of us to come together, speak our hearts out. Why do we speak our hearts out? Because this is a very safe space for communication. So we can talk about any matter that is relevant at that point in time. You can share everything that you want to share. Uh, there is only restriction with respect to two topics, religion and politics. Otherwise, we are free to talk on any subject. And to make this a little more meaningful and structured, we do have a theme every time. And this time, the theme, given the situation and given the Mausam, given the climate, we thought monsoon and rain, barsat, varsha, these could be a good uh, topic to discuss the impact that barsha or rain has on all of us, and some experiences right from our childhood, school days onwards, and how rain has played a role somewhere or the other. Somewhere you have enjoyed it. We have enjoyed. I'm sure everybody would have enjoyed rains. It would have had some nasty impacts also, like what happened in probably July 2005 in Bombay. That was harsh. So there are a lot of किस्सा काफ़ी स्टोरियाँ हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. So I would like you folks to organize your thoughts and speak about your experience with respect to any episode, anything that you can recall wherein it was raining and then there was something that happened and that is remained an experience in your mind. वो रहा होगा आपके दिल में समाया होगा. उसके बारे में अगर हम सुनना वार्तालाप करेंगे तो अच्छा रहेगा. राजेंद्र शाह जी बड़ा सही काम कर रहे, हाथ ऊपर किया है. देयर इज अ रिएक्शन बटन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. उसमें जाके अपना हाथ ऊपर कर लीजिए इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर आइडियाज एंड थॉट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. राजेंद्र शाह के बाद बीनू जी हैं, वो अपना बयान करेंगी एक्सपीरियंस, तजुर्बा. एंड उसके बाद एनीवन. यस, कैप्टन कुलदीप जी, नमस्कार. Welcome to the session. To all. So I hope you are clear about the topic that we have today. So we'll go ahead. Yeah, easy topic. And सबको तो experience हुआ होगा कुछ ना कुछ, I'm sure. So there will be good incidences, funny incidences, not so funny but impactful. So जो भी है, I would like to listen to one by one after the other, and at the end of it, time permitting, I'll also share my experience. So let's get cracking with Rajendra Shah ji. Very good evening, Rajendra ji. आप unmute करिए and बोलिए. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. ऐसे सर, am I audible? Very much, very much. Okay, sir. ऐसे तो वर्षा
वर्षा मीन्स एज आई एम फिजिकली हैंडीकैप, तो वर्षा के कारण मेरे को बहुत कुछ दिक्कत होती थी आने जाने में। मेरी जब ऑफिस में जाने का होता था, आने का होता था, कोई कोई बार मेरा स्कूटर बिगड़ जाता था रास्ते में, और हमारा स्कूटर कोई रिपेयर करने वाला होता नहीं है, रास्ते में दूर होती है ऑफिस, तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है। तो तकरीबन वर्षा मेरे लिए तो मैं तो उसको बहुत एंजॉय नहीं कर पाता था ओवरऑल। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था 31 जुलाई 2019, ये वडोदरा में अबाउट 30 इंच वरसाद हुआ था एट दैट टाइम, एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड वी वर इन द ऑफिस। तो घर तो नहीं जा सकते थे, और हमको सबको ऑफिस में रुकना पड़ा था पूरी रात। और सब मीन्स अबाउट 50 पीपल जो चले गए वो चल के घर पे गए। किसी ने अपना व्हीकल रास्ते में छोड़ दिया। बहुत लोगों ने चल के घर पे गए, दिक्कत से रात को 11-12 बजे पहुंचे, और मैं मेरी ऑफिस में ही रुक गया था। और उस सुबह में फिर दूसरे दिन दोपहर को 12-12:30 बजे फिर इसके बाद मैं निकल पाया था। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बोला चलो मैं शेयर करूं। ज्यादा मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा तो नहीं है वर्षा के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई कैन इमेजिन दिक्कतें होती हैं, वही दिक्कतों के बारे में हम लोग भी बात करना चाहते हैं कि यस 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 हाउ यू कुड काउंटर इट एंड हाउ यू मैनेज इट। नो प्रॉब्लम्स। आपके पास और फिर से आइडिया या कुछ याद आ जाएंगे तो यस। आप फिर से शेयर कर सकेंगे, नो ओके प्रॉब्लम्स। ओके सर, ओके ओके। ओके, बीनू जी अभी बात अनम्यूट करके बोलिएगा, and then after that it is Raman sir. Audible? Am I audible? Oh yeah, you're audible. Now? Better? Yeah, it's better. Um, my experience with rains has been like across states. When I was in Lucknow, can you hear? Problem? थोड़ा सा ये हो रही है, स्टॉप एंड स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा। Now audible? Yeah, the word now was very well audible, but afterwards थोड़ा Oh, okay. I'm probably mic is not working properly. mic is So when probably I was in Lucknow, my hometown and place of work also. There it was like rim jim barish. All of us used to celebrate Teej, Rakhi, sing Savni Kajris and all. So it was quite an experience. But when I came to Mumbai after marriage in 1995, what an experience the first rains were. Beyond comprehension, beyond imagination. And first time I saw that it was raining for 4 days altogether. Then I took a job in 1998 and came 2005, 26th July. That experience, like people who have not seen Mumbai rain, I can share with them. It was 2005 and my husband was in Canada that time. There was nobody, daughter was with babysitter, quite small, and I am in office. I was working for a publication as an executive editor. So that day I noticed that it was raining all through. So I told my team that you all of us leave at 4 today because it is raining heavily. हम लोग निकले ऑफिस से, इट वाज लोअर परेल। आपको मालूम होगा लोअर ही नाम है उसका, वो लोअर परेल ही है। तो हम लोग निकले, बाहर निकले, हाफ वे डॉली जी, देन वी केम, कमर तक पानी। You were walking in water. I was walking in water. I said, now I should go back to office. Because somebody in the way told me that trains have stopped, only indicators are working. So I went back to office. Those who were in office, I told them, you stay put. There is no way you can go without a train to office. No time, no cabs, no autos. Autos तो है ही नहीं वहाँ पे. No cabs, nothing. And no mobiles those days. And child is there with the babysitter and husband is far, far away. And I couldn't do anything. Then we all stayed put. No electricity, no connectivity. पूरा रात हम लोग ऑफिस में गुजारा. Then morning, somebody sent food for us. And then we started walking from Lower Parel around 2 p.m. when rain stopped. 2 p.m., maybe 3 p.m., maybe 4 p.m. we started walking. From Lower Parel to Mahim we walked, which is
many stations and many kilometers. On the way, people were very kind enough to serve tea and biscuits and all this. A girl coming from North India, Lucknow, the royal city, when office was just stone's throw away. What a nightmare! The term nightmare stood through that day. And then an auto wala obliged and he said, "मैम आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको कैसे भी कर दूंगा." और उसने कई घंटे ऑटो चला के from water. I don't know who that farishta was. He dropped me home and next day night I reached home. So this is Mumbai rains. Absolutely. Otherwise I enjoy rains. Otherwise I enjoy being on Marine Drive on rains and Dim Dim Gire Sawan. I really enjoy it. But that was something. So I thought of sharing with all the friends who are not from Mumbai and have not experienced rain. I can relate to this since I lived in Bombay for 43 years of my life, right from the time I was born. Yeah. वहाँ का बरसात and the flooding and on an average every year 2 या 3 दिन तो trains बंद भी हो जाते हैं, the commute becomes impossible. So stay put wherever you are. Those days work from home was not a very common thing, but this was something which we are used to, and people in Mumbai, they rally you around and they give every possible help to make sure that people Yes. are saved and they are comfortable in whatever way. I mean, I will Most resilient, talk much. most resilient cities on planet. Yeah, yeah. I mean, the way they help each other in ensuring that safety is the priority. I think hats off to Mumbaikars and the way they handle it. But the infrastructure, unfortunately, has not kept pace. And the way it gets flooded in some pockets, like King Circle is another one area where it always floods. Very unfortunate. Our school was in King Circle, so we as kids we used to love it क्योंकि छुट्टी मिल जाती थी स्कूल की. So you are back home in good time and you pray those days, आज और बरसात होती तो. I came to Mumbai quite grown up, so it was quite revelation for me. Those who have lived in the childhood, they know it. For me, it was like, my God. Yeah, yeah. As we talk, it is raining here in Bangalore. लखनऊ में क्या बारिश नहीं होती? मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं, तेरे लखनऊ में बारिश नहीं होती क्या? मैंने कहा होती है मगर ऐसी नहीं होती. चलिए, thank you so much, Vinu ji. Raman sir, please go ahead and unmute and share your thoughts on how it has been, or you share your experience, I must say, not thoughts. You can unmute yourself, Raman sir. If you are able, It seems to be some bandwidth issue at your end, Raman sir. Internet, I'm just out to a better area. Okay. Closer to I hope you are able to hear me. Now, yes, now we can. Maybe, yes. Okay. What I would like to say is, my experience with rain has been not very happy one, so to speak. Because, Ativrishti and Anavrishti, when there is too little rain, it causes pain. Yeah. When there is too much of rain also, Correct. It causes only more pain. Okay. Excess of anything is. Okay. I in the area where I was brought up till I was about 10 years of age. It was an area not experiencing any severe rainfall. Anyway, when I was about 8 years of age, we went to a touring talkies to see a film. The name of the film is Ganga Avatar. I still remember it. Ganga Avatar was the name of the film. And it was a tent kotai. A tent cinema. Yeah. Where they have something like a tarpaulin, not exactly a tarpaulin, some thick cloth for the roof. Yeah. And there is a projector, only one projector.
You know, the kind of theaters that you can never see now. It was there. The moment the film started, within 5 minutes, torrential rains broke out. Oh, wow. The tent kotai was almost blown to bits. It was raining like hell. Oh. And I was also scowling in fear. This is the first impression rain created in my mind. From that day, heavy rain always used to put me out a bit. Okay, with this background, I will go to the next. You see, this is when I was about 7 or 8 years of age. Okay. The next encounter was in 1952 when I was 14 years of age. Okay. There was again, it was cyclonic storm and heavy rain in Tanjavur district, which was most affected in that year. Oh. That was the time when the Ponniyin Selvan serial also started. Oh. And coincidentally, along with it, it also had a chapter Uri Kottu. Oh. That is something like a storm. What's the name? Something like a cyclone, something like. So this rain was so bad. The next day was Kartikai Deepam. Ah. The rain was lashing heavily. Trees were falling like 9 pins. It was raining and non-stop. And the rivers started flooding. And water would come into the village any moment. To my Sitapa, I was staying with my dad's younger brother. I was studying for 1 year, staying in their home. He said, tomorrow it is going to be Kartikai. Take the prasad and give it to everybody. I don't know whether we will be living tomorrow. It was so bad, you know. And one Harijan worker, what he did, you know, he did a remarkable thing, which is etched permanently in my memory. He cut off his little finger and threw it in the water, river water, saying that unless you sacrifice blood, the flood will never stop. It has to be given that, so that it subsides. Fortunately, it subsided anyway. Not a tile was in place, and almost 90% of coconut trees were just their tops were broken and fell down. It was horrible. Okay. With this, we come to the next stage. The year was 1956. I was just about 17 plus. And I got my job. We came to Nilgiris, Kunu to be exact. And there, I joined duty in April. And July was the monsoon season. Worst rains. The gale was so strong. It blew my friend's umbrella some 5 kilometers away. It flew just like that across the sky, not to be seen. It just went on and flew off out of sight. And one of the friends who joined duty with me, he was also from Tanjore district. That fellow started crying. You know, a man who is 19 years of age. He started crying, I don't want this job. I want to go back home. I am terrified of being here. You see, this is the story that I remember of rains, really and truly. And nowadays, with age, I become a bit mature now. Now, heavy rains are either not there or they do not terrify me. This is my rain story for you. Nothing pleasant about it. Ah. Thank you. Thank you, Raman sir. But it was interesting to hear you. While it didn't have a very happy ending or whatever you may say, but it was nice. Nice to any encounter with the rains is going to be funny as well as even now. You see, challenging. one of the sceneries I remember is that Kedarnath floods, where the buildings and houses came crumbling down Right. the river. Yeah, it is something unforgettable to me. Well, that is the fury of nature. Yeah, a lot of unprecedented things happen in situations like that.
And okay, let's hear others. Maybe I'll also share mine today, definitely, because it's something I can't resist. So Sanjeev ji, please go ahead and unmute yourself and share your experience. यस, सबको नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज ठीक आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, बढ़िया आ रही है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो सर, एक तो जो मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है ना, आई रेस्पेक्ट वेरी मच रेंस। मुझे रेंस जो है ना, बड़ा इनसे मैं कभी आई नेवर कंप्लेन। कि मैंने देखा है बहुत से लोग हमेशा कई बार कंप्लेन करे बारिश को अभी आना था, ये हमारा जब आ जाए कर, मतलब अपनी सुविधा से देखते हैं कि रात में बारिश आए जब हम सो रहे हों या जब हम कहीं पहुंच गए हों या घर में हों। तो मेरा ऐसा है, और मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि मैंने आज तक, तो जहां तक ध्यान है, मैंने आई नेवर यूज एनी रेनकोट और अम्ब्रेला। अगर यस, और बारिश आ रही है तो आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है मैं भीगना। और जैसे मैं उदयपुर में रहता हूँ तो हमारा थोड़ा हिल्स वगैरह है यहाँ पे, आपको लेक्स भी है, हिल्स भी है। तो जैसे अभी वो शाह साहब ने बताया था कि वो स्कूटर पे जाते थे, तब मेरे पास भी स्कूटर हुआ करता था, मैं बैंक में जॉब करता था। तो एक यहाँ पहाड़ है हमारे पास ही, जैसे घर से एक माछला मगरा नाम का एक, तो वहां पे क्या है कि मॉर्निंग में, मतलब जो रेन ये होता है, बारिश का सीजन होता है, तो वहां पे बादल रहने ही रहने हैं और वो डिजलिंग टाइप का रहता है। तो हमारे जो रास्ता है वो उसके नीचे से ही जाता है, तो बारिश नहीं हो रही होती है, लेकिन वो बादल इतने नीचे होते हैं कि भीगना ही भीगना है आपको, एनी हाउ यू हैव टू। ओके। हाँ, और लेकिन इतना अच्छा लगता था। आप सोचिए कि हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं, आपके चेहरे पे वो टच कर रही हैं और आप उसके जा रहे हो। तो मैं क्या करता था, एक जोड़ी कपड़े लेके जाता था अपने स्कूटर में रख के कि मुझे पता था गीले होंगे ही होंगे, भीगेंगे ही। तो उसको एक जो है एक रखे और अपने भीग पहुंच गए, वहां जाके चेंज कर लेते थे वहां पे। वहां पे जाके फिर डेली रहता था, पकौड़े वकौड़े मंगा के खाया करते थे, गर्मा गर्म बारिश के दिनों का जो डेली का मेनू होता था, कि क्योंकि ऑलमोस्ट आधे लोग तो भीग के ही आते थे उस टाइम जो है। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ का, और जब अच्छी उदयपुर में तो अच्छी रेंज होती है, अभी भी अच्छी हुई है यहाँ पे, लेक सारी ओवरफ्लो हो गई है। अभी जो इस बार बहुत 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि जुलाई के मंथ में सारी लेक जो है, हाँ, एक यहाँ की फतेह सागर एक लेक है, वर्ल्ड फेमस लेक है, वो कल ही ओवरफ्लो हुई है। तो यहाँ क्या लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब कोई भी संडे ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि लोग जो है पिकनिक पे ना जाए। मतलब पिकनिक पे जाना अपने आप में एक वो है, एक फेस्टिवल है मतलब। और यहाँ पे जैसे अपन सोचते हैं कि चलो यार, अपने जैसे कोई, जैसे दिल्ली का मानो कि भी इंडिया गेट है या वो लाल किला है, चले गए एक बार देख लिया वंस ए वाइल। लेकिन यहाँ पे लोगों को क्रेज है, यहाँ जैसे वो जितनी भी लेक्स हैं सिटी में, या 3-4 लेक्स हैं यहाँ पे। एक पिछोला लेक है जिसमें होटल लेक पैलेस बना हुआ है, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे जाएंगे, वहां पे लोग सुबह के टाइम स्विमिंग करेंगे जाकर। और ऐसे फतेह सागर है, वहाँ शाम को आप आधे से ज्यादा लोग मतलब उदयपुर के ही होते हैं लोकल। ऐसा नहीं होता है कि जो बाहर से टूरिस्ट आ गए हैं और उनसे वो है। तो दे आर सो क्रेजी। और एवरी डे मतलब दे डिस्कस कि आज इतना पानी बढ़ गया, आज 1 फीट पानी आया है, आधा फीट पानी आया है। और वहां बैठ के वो करेंगे कि जो अब 2 दिन में तो ओवरफ्लो हो ही जाएगा, 2 दिन में तो ओवरफ्लो हो ही जाएगा यहाँ पे। इस तरह के डिस्कशन वहां पे होते रहते हैं। और एक बार मेरे को पता है कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आज रात में हो सकता है। तो लोगों का आप देखिए, पूरी रात कम से कम वहां पे 1000-2000 लोग रह के, मतलब हमको पहला मौका मिलना चाहिए, वी विल बी द फर्स्ट टू वॉच दिस सीन कि ओवरफ्लो हो रहा है। और आप देखिए लाइव चलता है वो, एक आप लाइव उस पर लिखिएगा आप यूट्यूब पे, तो वो लाइव चलता रहता है, यू कैन वॉच एनी टाइम। शुरू हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा। हाँ, और नाइट विजन देखिएगा, उसमें कलर वहां पे कर रखा है, वहां पे लाइटिंग कर रखी है, कलर। हाँ, तो आप देखिएगा यूट्यूब पे डालिए कि ओवरफ्लो इन फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक, ओके, इंटरेस्टिंग, देखना पड़ेगा। जी जी, दिस इज माय एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे। ये जो आपने फोरकास्ट की बात की, प्रेडिक्ट किया था किसी ने कि रात को बरसात होगी नहीं होगी, अभी हाल ही की बात बोल रहा हूँ मैं
हमारा एक अभी बॉम्बे में प्रोग्राम हुआ 8 तारीख को, दैट वाज लास्ट सैटरडे, जी जी जी। म्यूजिकल इवेंट हुआ था, तो वी हैड गॉन टू बॉम्बे एंड करीब करीब जुलाई 2 या 3 तारीख से हम लोग को रेड अलर्ट मैसेज आने लगा था कि 7th, 8th एंड 9th मैक्सिमम रेन्स इन बॉम्बे फोरकास्ट। हम्म। तो हम लोग तो थोड़ा परेशान तो हुई थे कि लोग भाग आएंगे, ऑडिटोरियम बुक हुआ है, कमिट भी किया है लोगों ने, पैसे भी भरे हैं, सब कुछ हो चुका है। प्रोग्राम अगर नहीं होता है तो इट विल देन वी आर गोइंग ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर टू बॉम्बे। राइट राइट। बट इट वॉज ए ड्राई डे, सनी था काफी हद तक। सो ये जो मेट्रोलॉजिस्ट या फोरकास्ट जो कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ एक्यूरेट दैट कैन बी। सो with all the data and all the information they have, somehow Yes, yes, yes. मैंने देखा है कि not always they are right, yeah, sometimes they are right also. So ऐसे तो हम you and I also can forecast कि हाँ अभी बरसात होगा या जो भी। राइट। So good. So thank you संजीव जी, अच्छा लगा सुन के आपकी बात। जी जी। डॉली जी ने हाथ ऊपर किया हुआ है। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर, प्लीज हाथ ऊपर कर लीजिए यूजिंग द रिएक्शंस बटन। कैप्टन कुलदीप ने हाथ ऊपर मैनुअली किया है, so we'll come to you next. So Dolly ji, please unmute. Oh, you have already unmuted. Thank you so much. Good evening, sir. Very good evening. I am audible? Oh yeah, you are. Okay. आपने रेन के ऊपर, रेनी सीजन के ऊपर क्या बोलूं, बहुत खूबसूरत यादें हैं बचपन की। रेन का मतलब इंजॉयमेंट होता था, बच्चे होते थे और घंटों में मुझे याद है कि मैं विंडो पे बैठ जाती थी और घंटों बारिश होती थी तो वॉच करती थी। और आई स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ रेन या बारिश से रिलेटेड सॉन्ग गाना। और छोटी छोटी वो कागज की नाव बना के वो हम करते थे। और बारिश का मतलब, रेन का मतलब सावन आ गया। सावन को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सावन का मतलब मुझे लगता था कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया हमारा। बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल होता है तीज, हम उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। तीज आया, राखी आई, उसके बाद देन कृष्ण जन्माष्टमी, उसको भी। तो ये कि फेस्टिवल सीजन होता था हमारे लिए, और खास करके गर्ल्स के लिए। और हमारे फादर सावन शुरू होने से पहले ही हमारे घर में झूला पड़ जाता था। अब वो झूला, उस सावन में झूला तो बहुत अच्छा, कहते हैं कि तो मानते हैं झूला झूलना चाहिए, झूले के दिन होते हैं। तो हम पूरा सावन के बाद भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने झूला पड़ा ही रहता था, वो हटाते नहीं थे हम लोग। तो राखी आ गया, या आ गया। दूसरा, बारिश होती थी तो हम प्रे करते थे तेज बारिश हो तो स्कूल ना जाना पड़े, स्कूल की छुट्टी के लिए हम। क्योंकि तब स्कूल में थोड़ा टफ टाइम होता था। टीचर्स बहुत जो है कहना चाहिए कि सख्त होती थी कि भाई बहुत डिसिप्लिन में हम लोग रहे हैं, और बहुत पढ़ने वाले बच्चों में तो हम तो ज्यादा इंजॉयमेंट करने का स्कूल में बहुत ज्यादा मौके नहीं होते थे। हम छुट्टी के लिए इंतजार करते थे, बारिश हो तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इसके साथ, बारिश के साथ तब तो मैं बहुत इंजॉय करती थी, क्योंकि तब ये बच्चे थे, ये सब नहीं था कि यहाँ पानी भर गया वहाँ, वो सब हमारे सोचने की चीजें नहीं हुआ करती थी। हम सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करते थे। आज बारिश है तो चलो ये बनाएंगे, आज ही बारिश है तो घर में ये चीज, कोई नई नई चीजें बनती थी, हम उसको इंजॉय करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, मेच्योर हो गए, तो अब हमें नजर आता है नहीं, बहुत देर बारिश में नहीं भीगना है, हम नहीं भीगे, बच्चे ना भीगे, बीमार हो जाएंगे। या फिर इधर पानी भर गया, अरे अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी शुरू। अब हमारा देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो गया बारिश से। लेकिन बचपन में मैं बारिश को थॉरोली इंजॉय करती थी और इंतजार करती थी कि बारिश आए। तो मैं पूरा टाइम इसको बहुत इंजॉय करती थी, बारिश को। तो बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी यादें हमारी बारिश के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बुरा तो कुछ भी नहीं बचपन में था, लेकिन हाँ अब उतना अच्छा नहीं लगता। अभी भी दिल्ली में 2 दिन से बहुत बारिश है और पानी कई जगह भर गया है। अब वो चीजें, हमारा नजरिया चेंज हो गया, तो उतना एंजॉय नहीं करते। लेकिन हाँ, बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अभी विथ एडवांसिंग एज हम लोग को भी केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं फिसले नहीं, कि आराम यस चले एंड स्टफ यस लाइक। बचपन में तो वो चिंता ही नहीं थी। ऑल
आई यूज्ड टू प्रे कि आज रात को ऐसे बरसात हो कि कल फ्लडेड हो जाए और स्कूल ना हो। बस राइट राइट। घर बैठो आराम से। नहीं, पर स्कूल तक जाते जरूर थे, क्योंकि पानी में लोग जाके वो बोर्ड देखते स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, हाँ, पढ़ के फिर हम वापस आते थे, तो वापस आते थे। उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन था। फ्लड में भी चल के जाते एंड वापस आ जाते थे, मजा आता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बारिश में भीगना अच्छा भी तब बहुत लगता था। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बच्चों को तो और भी। एक्चुअली आई तो encourage my children to go and enjoy themselves in the rain here. अब इवन बॉम्बे इट वाज वेरी सेट, जून जुलाई अगस्त या 4 महीनों के रेन्स होते थे। यहाँ बैंगलोर में ऐसा नहीं, इंग्लिश वेदर है, एनी टाइम इट कैन रेन। द मोमेंट टेम्परेचर टचेस कोई एक लेवल पे आ गया, गर्मी ज्यादा हो गई, तो शाम को बरसात। बरसात हो गई। तो यहाँ पे तो बहुत डल वेदर है, यहाँ टू मच ऑफ अच्छा नहीं है। एनीवे, पीपल Okay. लाइक बैंगलोर वेदर इज फेमस थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली किसी किसी को जो आदत हो, हमको बॉम्बे की आदत है बचपन से। नेवर माइंड। थैंक यू सो मच जी, Thank you. अच्छा लगा सुन के। अरुणा जी, यू आर नेक्स्ट। उनके उसके बाद है हमारे कप्तान साहब। गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ अरुणा जी एंड बोलिए। या नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। जैसे रामन सर ने बताया था, वैसे ही मेरे को भी केदारनाथ का याद आया। जब हम लोग गए थे, कुछ नहीं थे, एकदम बिल्कुल ठीक था। हम लोग ऐसी लाइन में खड़े होने के लिए जा रहे थे, तब तक पानी गिर गया विद इन मोमेंट्स। वहीं पे साइड में रेन कोट्स मिलता था, तो लेके हम लोग पहन लिए। तब तक तो भीग गए, फिर भी पहना। 5 minutes प्लीज। किसी को दी दीजिए, दूसरे को दीजिए। ओके ओके, तो आप म्यूट कर लीजिए। वी लिसन टू और कमांडर जी कहाँ पे खो गए, निकल गए वहां से। चलिए अजय जी, यू गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। और हैप्पी रेनी सीजन। बस एंजॉय करो मानसून को। एंजॉय कर रहे हैं सर हम तो। वही मैं अभी जैसे सुन रहा था आप लोगों की सबकी बातें रेंज के। वी बिलोंग टू राजस्थान बेसिकली। तो हम लोगों के लिए तो ये उडुपी में जो रेंज है, इट इज रियली समथिंग। जैसे कि हमने तो खाली बुक्स में ही पढ़ा था कि वो जहाँ पे कौन सी जगह है वो, जहाँ चिरापूंजी। चिरापूंजी का सुना था कि वहाँ नॉन स्टॉप बारिश होती है और बहुत सुबह शाम से, मतलब यही हाल यहाँ उडुपी में हमने देखा था। तो यहाँ तो पिछले लास्ट ईयर तो ये हाल था कि अराउंड 2 महीने पूरे कंटिन्यूस सूर्य देव के दर्शन ही नहीं हुए। और अभी भी सिंस लास्ट 28 मई, जून सॉरी, और ऑनवर्ड टुडे एज ऑन डेट नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। हाई अलर्ट, रेड अलर्ट और पता नहीं क्या क्या अलर्ट है। पर हम लोग तो वही है ना सर, हमारी तो आदत ऐसी है, हम तो रुकने वाले नहीं है। छतरी लेके भी चल देते हैं और जो पॉसिबल होता है इमीडिएटली कि भाई निकल गए और बारिश का मजा लिया। मैं आपको शेयर करना चाह रहा था सर, वो जयपुर का एक किस्सा है हाँ जी। बारिश का। आई थिंक इट इज अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1995-96 की बात है कि वहाँ पे फ्लड सीन हो गया था पूरा। बहुत जबरदस्त बारिश थी और ये हाल हो गया था कि घुटना तो बहुत बड़ी छोटी चीज है, मतलब अब तो यहाँ पे कमर के लेवल तक पानी था, पूरी रोड एंड एवरीवेयर इन जयपुर। तो अराउंड 15 डेज कंटिन्यूस रेन हुई थी और वो कहीं पता नहीं कितने करोड़ सालों का रिकॉर्ड टूटा। और वहां पे एक नाला था, आप जिसे कहते हैं अमानिशा का नाला। वो एक अमानिशा का नाला, एक मतलब एक छोटा सा नाला था जो रेनी सीजन में जो जनरली हो जाता है। बट दैट उसने जो डिसास्टर किया था पूरा हमारा, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला कैंपस पूरा,
और हमारा एरिया का टोटल सुबह हम मॉर्निंग में हम आफ्टर 5 या 6 दिन बाद जो घर में देखने गए सब, क्योंकि सारा कट ऑफ था टोटली जयपुर। थोड़ा बहुत जो है ना न्यूज में, और वो जो आपके न्यूज में जल्दी आ जाता है, थोड़ा जो रेडियो की न्यूज में बस वो सुनते थे, और कि ये हालत हो गई वो हालत हो गई। फिर देखने गए तो साहब वो तो गजब का सीन था, वो सीन भूलता नहीं है, अनफॉरगेटेबल। जितनी वहाँ पे शॉप्स थी रोड के अक्रॉस जो होती हैं गुमटियां जिसे कहते हैं, वो टोटली फिनिश, और पता नहीं कितने मकान, कितनी दुकानें, कितने क्या लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का डिस्ट्रॉय हुआ। तो भगवान के से बस यही प्रार्थना करते हैं सर कि ये डिसास्टर जो अभी भी, जैसे अभी उत्तराखंड और पूरा हिमाचल बुरा हाल हो रहा है इस टाइम, तो हमारा इवन हमारा चंडीगढ़ itself, चंडीगढ़ पंचकुला, पूरा चंडीगढ़ अंबाला हाईवे ब्लॉक पड़ा हुआ है, और चंडीगढ़ टू शिमला टोटली बंद है, लाखों टूरिस्ट फंसे हुए हैं, और लैंडस्लाइड और पता नहीं कहाँ कहाँ। मेरा जो बद्दी में घर है, वहाँ बद्दी में नालागढ़ के वो पूरा डैम ही, उसमें उसकी एक पुल का हाफ ऑफ द पार्ट हैज बीन फिनिश। और अल्टीमेटली अब वहाँ भी चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट है कि एनीथिंग कैन बी हैपन, तो वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो कहने की बात है, सब कुदरत का नज़ारा देख के तो यही लगता है कि भगवान कुदरत केयर ना करे, बस हमें खुशियां ही देता रहे। हम एंजॉय कर रहे हैं अपने छतरी लेके, और थोड़ा बहुत पानी में भीगते भागते और गाने गाते मिस्टी मारते, बस वो अप टू दैट इज गुड। इसके बाद जो है वो सब डिसास्टर वाली पोजीशन वो नहीं होनी चाहिए, बस वो प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक एक जगह पे होती है, सुनामी भी हुई थी, इम्पैक्टेड चेन्नई इन ए वेरी बिग वे 2005 में। बरसात तो नहीं था, लेकिन सुनामी वाज अनदर डिजास्टर। चेन्नई में आया था, यस आई नो। केरल बहुत बुरी हालत हुई थी साउथ में भी। मैं गया हुआ था चेन्नई में, वो नसीब अच्छा था कि मैं उसी दिन रात को ड्राइवर को बोला कि तुझ में ताकत है वापस जाने का, आज कहाँ जाए, गेस्ट हाउस में ठहर रहे हो? तो बोले नहीं चले जाएंगे। तो हम लोग निकल गए। तो वैसे तो मैं वापस आ गए, टाइम पे आ गए। वो एक वो आपको कोई कहते हैं ना कि भगवान भी एक अलार्म देता है, सबको देता है अलार्म। ये नहीं है कि आप सोचे कि सबको देता है टाइम की, अब जितना जल्दी हो सके जो इवैक्यूएट हो, लेकिन वो वही है कि जिसकी आनी होती है उस पे आती है, जिसपे जैसे आपने अगर देखा कभी पानी भरने लगता है तो आपको अगर नहीं पता चलता है वक्त पे तो आप तो मुश्किल में हो जाओगे, भागना पड़ता है वहां से, ऐसे हो जाता है। एनीवे थैंक यू अजय। मैंने देखा ना सर, अभी हमारी कुछ वीडियोस आई है वहाँ की, मेरे फ्रेंड सर्कल में भेजी हैं, वो दे आर जस्ट एंजॉयिंग, तमाशा देख रहे थे। और तमाशा देखते थे, जिस रोड पे वो खड़े थे वो पूरे दोनों तरफ से वो रोड कोलैप्स। वो कहते कहते लोग चिल्ला रहे हैं कि भागो भागो, लेकिन वही है ना कि तमाशबीनों का भी दुनिया में कमी नहीं है। हाँ, तो ये बस ये चीजें हैं जो, बाकी तो हम लोग तो सावन की और बारिश की इंतजार करते हैं कि आए और झूमे गाए। स्पेशली इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे ना, अप्रैल में गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, यू एक्चुअली वेट फॉर बरसात, राइट। बरसात आया तो राहत मिलती है थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, सही बात। फिर भी वो ह्यूमिडिटी इतना है वहाँ पे तो डिफरेंट है। इस चीज में हम लोग कर्नाटका वाले बचे हुए हैं। वी डोंट हैव सो मच ह्यूमिड एंड ऑल दिस थिंग इवन इन उडुपी, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही, my Malpe beach is around 5 kilometers from my house. But even then हमें को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि खाली एक मई और जून के महीने में थोड़ी गर्मी थी, गर्मी होती है, तो थोड़ा बहुत एसी यूज हुआ। अदरवाइज फैंटास्टिक। बेंगलोर तो मेरा है ही, तो आपका ऑल द सीजन ऑल द ईयर है, एंटायर साल पूरा बढ़िया बारिश गिराती है, बारिश भी है, मौसम भी बढ़िया है, सीजन फैंटास्टिक है। चलिए, थैंक यू अजय। In the history of the earth,
we read that there have been continuous rain for a number of years. Origin of earth, if you count from the time the earth came to being. Torrential rains for years together at a stretch. And now remnants are there. When the rains are lashing like that, we observe the fury of nature. Not exactly fury, it's rather power. I used to wonder, as a child, I used to tell my elders, why God is not making the rain fall only on fields. and I used to ask them, and one person answered it to me very beautifully. I would like to recite that incident. It was an old lady. She said, "You see the banyan tree over there, the people tree here, the big tamarind tree, and all that. If rain only fell on your paddy fields, how will these trees survive? There is heavy rain lashing the earth because it is such rains, 2 or 3 in a year, that gives nourishment to these trees. Without such torrential rains, it will not be there. And God did not intend this earth only for you and me or human beings. God is supposed to take care of the tree on the roadside, everything from worm to the developed being. So there is a logic in it which you may not understand because you are young. As you grow older, you may perhaps understand why this happens. True. So nature's fury, whenever we see, we have to appreciate under what kind of huge power this has come into being, and all the edifices that man builds can be washed away just like that if the rain persisted for 3 more days, something like that. Correct. So that gives us an appreciation about the power of nature. Yes. Well said, Raman sir. कैप्टन कुलदीप, if you can unmute, क्योंकि आपने बहुत पहले हाथ ऊपर किया था. Next I will go to Aruna ji क्योंकि we had to truncate her discussion. So Captain Kuldeep to unmute and share. नमस्कार सभी को. नमस्कार. मेरे अनुभव तो बहुत अच्छे रहते हैं सर. आई एम एंजॉइंग द रेन सिंस 1968 and I love to be in rain. This is a beautiful season. We are lucky that we enjoy all kind of a season. Only difference is that during those days स्कूटर मोटरसाइकिल पर बैठ करके चंडीगढ़ में खूब सारे आम के थैले लेकर के खुद भी खाते थे सड़क पर रेन में भीगते हुए और देते भी थे. अब ये आ गया है कि जब भी रेन आती है, सिट डाउन इन योर कार, गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव एक्सयूवी पे बैठ करके एंड एंजॉय इट. और आते हुए यू गिव ए लिफ्ट टू द नीडी पीपल आल्सो. वेरी नाइस. लॉन्ग ड्राइव, एंजॉय द रेन. मेरा ख्याल सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर बहुत ही मायने रखती हैं. और मुझे तो समझ नहीं आता दिस इज नॉट अ पास्ट. हमें आज भी अपने आप को उतना तंदुरुस्त रखना चाहिए कि आज भी रेन आए तो हम बाहर चले जाएं. मैंने ड्यूरिंग माय ड्यूटी के टेन्योर में आर्मी में जरूर रेन कोट इस्तेमाल किया है. अदरवाइज मैं ना कभी छतरी इस्तेमाल किया, ना कोई शेल्टर इस्तेमाल किया. आई लव टू बी इन अ रेन. something really great thing from the nature side, that it really at appropriate time it rains. ठीक है, आजकल जरा प्रकोप ज्यादा हो रहा है नेचर का, पर वो हमारी वजह से ही है. आप पहाड़ों में देखो ना, बड़ी कम पॉपुलेशन होती थी, अब सारे के सारे पहाड़. आई बिलोंग टू चंडीगढ़. हम शिमला जाते रहते थे. पहले शिमला तक जगह ही जगह खाली होती थी. अब चंडीगढ़ से आप आगे जाइए, कोई ऐसी जगह नहीं जहां कंस्ट्रक्शन ना हो. तो जमीन तो अपने आप कमजोर पड़ेगी. नेचर ने तो वही करना है जो उसके लिए है बना हुआ. तो कसूरवार तो हम ही है. पर रेन का मजा तो आज भी. yesterday also I was for 4 hours I was on a long drive on my XUV रेन के अंदर with something. अभी I was hearing कि अब हम बड़े हो गए हैं. हम बड़े नहीं हुए, रादर अब बचपना आया. Now we have started enjoying it. Now we know that how to take care of ourselves. तो उतना ही ध्यान रखते हुए we can enjoy as much as we wish.
मैं तो कहता हूँ किसी को अगर रेन का एंजॉय करना है तो कम एंड ज्वाइन मी, ओपन इनविटेशन टू एवरीबॉडी। आपका ऑफर हम याद रखेंगे। जी 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 बिल्कुल, एनी टाइम, ऑल द थिंग्स, इट इज फैंटास्टिक, रियली रेन इज फैंटास्टिक, जस्ट गो आउट, लिसन टू द म्यूजिक एंड एंजॉय योरसेल्फ। Thank you. Wonderful. Thank you, Captain Ji. Aruna Ji, if you can unmute yourself. जी सर। Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity for again. No problem. Actually, I lost my line. Okay, sir. वो केदारनाथ जब गए थे हम लोग, ऐसे पानी में भीगा था, तब तक क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने लाइन इधर इधर हो गया, हम लोगों को आगे में घुसा दिया लाइन में। One group member missed. We were there, but one member missed. Anyhow, हम लोग दर्शन कर लिए थे, दर्शन करके बाहर आ गए, but we were waiting for that lady, not gent lady. करीब 3 घंटे हम लोग ऐसी बारिश में खड़े खड़े उनके लिए वेट करते करते मेरा उंगली सब ऐसे एकदम कड़क हो गया। इतना ठंड, हम लोग को आदत भी नहीं है ना साउथ में रह रहे करके, इन लोगों से भी हमको थोड़ा दिक्कत ज्यादा पड़ गया था। आखिर में 3 घंटे के बाद में वो मिली थी, तो उनको लेकर के रूम में आ गया। फिर भी वो ठंड से हम लोग बच नहीं पाए थे। बारिश वो बारिश में नहीं भीगता तो वो दूसरी बात होती थी। सिगड़ी लिया, सिगड़ी भी 5 मिनट में बुझ गया। तो होल नाइट रजाई था, कुछ था, लेकिन एक करना पड़ा। कैसे कैसे रात गुजार के सवेरे उठ के जल्दी जल्दी नहा धो करके घोड़ा चढ़ के नीचे आ गया। वो पानी ने माहौल पूरा खराब कर दिया हमको, लेकिन दर्शन तो अच्छा हुआ है, वही बात है। और बाकी कुछ देख नहीं पाए थे, क्यों जर्नी सब फिक्सड होता है ना, दूसरा कुछ देखने के लिए टाइम नहीं होता। फिर भी ज्योतिर्लिंग तो देखा हुई हमको, बस से करके हम हमको। लेकिन वो बात में बहुत मैंने कभी जिंदगी में इतना हम ये नहीं हुआ था, पूरा रात नहीं सो सका, शिवरिंग। अंडरस्टैंडेबल। हमारे दोस्त लोग नॉर्थ वाले हैं, वो लोग स्नो भी देखेंगे, पर ग्लेसियर्स थे, उसका चलते और भी ठंडा होता। राइट। तो बहुत तकलीफ हुआ। वो बारिश नहीं होता तो उतना नहीं होता, लेकिन बारिश के चलते हम इतना तकलीफ फेस किया ना, I cannot forget it whole life. I know, I can imagine. Thank you, sir. ऐसे होता है, स्नो गिरने के बाद, स्नो गिरते वक्त इतना ठंडी नहीं लगता है, ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, शाइन जब गिरती है तब ज्यादा ठंड लगती है स्नो। थैंक यू जी, अरुणा जी। उमेश जी, आपने हाथ ऊपर किया था कुछ देर पहले, वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ जी। Okay. Audible to all of you? Yes. Okay. Good evening, first of all. Very good evening. देखिए, हर मौसम जो है, पर्टिकुलरली हमारे देश में, उसका एक अलग सा क्या बोलते हैं कि ब्यूटीफुल नेचर होता है। बिल्कुल। बारिश हो, ठंडी पड़े, या तो गर्मी ज्यादा हुआ, गर्मी बढ़ा। अगर गर्मी ज्यादा नहीं हुआ तो बारिश नहीं होगा, अगर बारिश नहीं हो तो ठंडी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। एक रिलेटेड होता है। तो इसमें एक ही चीज जो ध्यान रखना है, जो भी चीज, मान लो कि आप ज्यादा पी लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा खा लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा सो लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी जब ज्यादा बारिश हो गया, तो ज्यादा गर्मी पड़ा या तो ज्यादा ठंडी पड़ा, तो उस वक्त भी प्रॉब्लम होता है। ये तो नेचर है, इसके हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो भगवान का देन है। तो जब बारिश का बात हो रही है तो फर्स्ट सबसे पहले मैं जो बारिश में जो पहाड़ के इलाके में गए हैं सब, जो वहाँ का जो हालत है हिमाचल प्रदेश का वगैरह, तो परेशान है, बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे लोगों का पता भी नहीं है। मैं अपने दिल से भगवान को दुआ कर मांगता हूँ कि उन सारे जो लोग वहाँ पे है सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचे। बिल्कुल।
ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत दूसरी बात जो है, मैं कर्नाटक से बिलोंग्स करता हूँ। एक प्लेस है यहाँ पे हुबली। हुबली तो यहाँ पे सभी जो है जो नॉर्मल होता है, बारिश नॉर्मल, गर्मी नॉर्मल और ठंडी भी नॉर्मल। तो एक बिजनेस सिलसिले में मैंने गया था पुणे लॉन्ग बैक। तो वहाँ पे कस्टमर के साथ जब डिस्कस करते रहे तो ऑलमोस्ट इट वाज 8 o'clock in the night। तो वहाँ पे वो कस्टमर बोले कि सर अभी टाइम हो गया तो विल हैव डिनर एंड व्हाट यू आर डूइंग टुमारो। आई सेड टुमारो एनीवे आई एम अगेन जॉइनिंग फॉर द कंटिन्यू ऑफ द मीटिंग। नहीं सर, कल हमारा छुट्टी है। तो छुट्टी है तो फिर पूरा दिन मैं क्या करूंगा बैठ के। तो उन्होंने सजेस्ट किया, सर हम सब लोग लोनावाला जा रहे हैं, बारिश में भीग। नाइस प्लेस लोनावाला। लोनावाला तो ये बहुत पुरानी बात है, करीब मेरे ख्याल से 30-35 साल की पहली वाली बात है। ओके। बारिश का मौसम है सर, तो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय। मैं बोला चलो ठीक है सर, एक कंडीशन है, आप हाफ पैंट पहनना है, टी शर्ट लेना है, हवाई चप्पल पहनना है, शूज वगैरह कुछ नहीं, और एक एक्स्ट्रा स्पेयर कपड़े आपके पास रखना है। तो यहाँ पे जाना है 2 व्हीलर में, तो बस वगैरह नहीं, 2 व्हीलर में जाना है। तो बिलीव मी कि इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया। बस पूरी दिन घूमते रहे, खाना खाए, घूमते रहे। और वापस जाते वक्त बोले कि नहीं थोड़ा पैदल जाएंगे, वहां एक मंदिर है गुफा में, एक वीर था। तो आपने शायद सुना होगा तो देखा होगा। तो वहां पे जाके माता जी का दर्शन करके हम फिर वापस पुणे में आ गए। वो जो दिन वहां पे जो मैं गुजारा था सब लोगों के साथ, मजा किए, हंसी मजाक हो गया, ये हो गया। क्राउड उस वक्त भी क्राउड, बहुत सारा क्राउड था। एंजॉयमेंट ऑफ द रेन आई रियली एंजॉयड इन दैट पर्टिकुलर डे। और उसके बाद में तो हमारे यहाँ छोटा मोटा बारिश होते रहता है, सर्दी भी होता रहता है, वो बात अलग है। ये जो उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जो हुआ है वो बहुत बहुत मतलब बहुत दुखदायक, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और बस मैं यही दुआ करता हूँ कि सब लोग वहां से निकल आए सुरक्षित, अपने अपने घर पहुंचे, अपने फैमिली से मिले, अपने अपने बच्चों से मिले, अपने अपने माँ बाप से मिले। क्योंकि जो भी वहां नहीं गए वो बहुत मेरे ख्याल से परेशान होंगे घर पे बैठ के कि ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है। तो मैं आशा यही करता हूँ कि वो लोग सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचे। मुझे मतलब देने का एक मौका देने के लिए धन्यवाद। और पहले भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, ऐसा नहीं कि मैं नया हूँ। ओके, मे बी आई मिस्ड इट। या नहीं, इसमें क्या होगा कि जो गीत गाने का जो ये रहता है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, माय नंबर वाज समथिंग लाइक 46-48। वो नंबर तो आने वाला नहीं था, बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय ऑफिस राइट नाउ। अच्छा। सो आई एम नो एमडी ऑफ दिस ऑफिस। सो जब पूरे लोग रहते हैं तो मैं ना तो गाना गा सकता हूँ ना तो कुछ बोल सकता हूँ ज्यादा से, बिकॉज इट इज आई हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। करेक्ट। सब लोग चले गए तो आई कैन टॉक टू यू फ्रीली। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने ये मौका दिया मुझे बात करने के लिए। प्लेजर इज ऑल अवर्स। आपने लोनावाला बोल के हमारी भी याद ताजा कर लिया। हमने बॉम्बे पर लोनावाला गए हुए हैं उस जमाने में, खंडाला बहुत हिल, तो बहुत मजा आया उस वक्त। तो गाना भी शुरू कर दे, अब के सावन में को भी गिरे बोल के। क्या बात है। lot of things have been still I remember and thank you for giving me opportunity. Very much. शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आई थिंक बीनू जी ने हाथ ऊपर किया था इन बिटवीन, कुछ बात याद आ गई थी उनको बोलने के लिए। इसके बाद सुरेश नंदा जी बात करेंगे। बीनू जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Audible? हाँ जी। This is for Dolly ji. I have nothing to say. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। For you, Dolly, I have nothing. Thank you, Beenu ji, thank you so much. मेरा favorite है ये. Thank you. कागज की नाव।
That is a beautiful piece. अच्छा सा गजल है वो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में. Very well rendered. Timing भी आपका बहुत सही था. अच्छा लगा सुन के. I wanted to sing immediately after Dolly. That's why I ना उसने याद ट्रिगर कर दिया था उसका. दौलत भी ले लो, शौहरत भी ले लो. बहुत बढ़िया. अच्छा, वहाँ सुरेश नंदा जी बोलेंगे अभी, उसके बाद सुब्रमण्यम जी बोलेंगे. Can you hear me, sir? Yes, very well. Baris, the rainy season. Oh my God. I can connect with my college days because I was born and brought up in Jaipur and Koraput district of Odisha. It was raining heavily. So I was studying in my BA honors. It was an English literature class. My professor, Mr. S.V. Panda and N.V. Rao, they used to recite poetry of John Donne, then Wordsworth and all these things. But my why now she's a married woman, I cannot say anything. She was my best female friend. I adore her, Renuka. So she didn't come to the class because of heavy rain. I miss her a lot and lot and lot. So please, please forgive me. I will send this video to Renuka too, because it was, see, Good, you're in touch with. The greatest pain in this world is unrequited love, sir. Acha. Unrequited. You see, I studied in college in 76 to 80. Those days it was very strict and restricted society. So it is very painful, sir. But this session is dedicated to रेणुका. चलो रेणुका, उनका इवनिंग बना दिया आपने. अभी आप स्टिल हो गए हो, यू आर फ्रोजन. Not due to heavy rain. नहीं, क्लैरिटी नहीं है आपकी. आई थिंक आपके यहाँ बैंडविड्थ की चल दिए रेणुके के पास. So let's request Subramaniam Vishwanathan to unmute and उनका किस्सा सुनते हैं बरसात में, क्योंकि उसमें काफी मुझे कॉमन होगी, क्योंकि we studied in the same school, same class. Unmute, bro. Hi, am I audible? You're audible but not visible. 1 minute. I like to be hidden always. Okay. See, my thoughts. Monsoon is part of a seasonal cycle, right? But within the monsoon period of 2-3 months or so, we undergo a mood swing cycle. This is typical. You know, the first rains are welcome and it's a big relief from the heat and we enjoy, we get drenched and all that. But as slowly the days pass by and rain intensifies, we are stuck. We are mostly stuck at home. If it is school days, it is fun. The school will be always closed. But for the working people, it's a big dilemma. And inevitably, during the season, there are 1 or 2 days
where it's a maximum monsoon displays its maximum fury, and there is havoc, and of late it has become a life and death situation, even in a city like Mumbai. Okay, so but inevitably the Mumbaikar, typical, I'm talking specifically of Mumbai because I was born and brought up in Mumbai. Right now I am in Baroda and escaping the, all the hassles. So, and Mumbaikar, often it is, I mean, it's the same situation every time. Municipality खड़ा खोद के रखा है, कोई गिर गया, pothole में गिर गया, trains बंद हो गया. फिर भी it is said about the Mumbaikar spirit that he always turns up for work, or heavy the rains or so. This I also have observed. Yeah. And this was going on, but in 2006, right? 2006, it was a real horror. Okay, I don't want to go into the details, but with my own family, it was like the Bollywood film where the families get separated. I was abroad, and my wife had taken my daughter. She was very small, to a special school by local train, and she got stranded in between at Bankud. Okay, and my son was also small, hardly. Maybe he was a 10-year-old or something. He had gone for tuition, and he was held up in a tuition class just 2 blocks away from my house, because his height was less than the flood level between the 2 buildings. So, and there was absolutely no communication. Okay, I was trying to frantically ring up, no response, nothing. And somehow wife and daughter, they managed to wade through the floods all the way from Mankud to Chembur, a few kilometers. Luckily, a good Samaritan carried my daughter on his shoulder so that she doesn't. So all this, and I had absolutely till midnight for almost 5-6 hours. Absolutely, there was no communication. So I really shudder to think of that day. Okay, and fortunately, I mean, the subsequent years it was not so harrowing. But still, inevitably, 1 or 2 days there are in Mumbai where even lives are lost, landslide and this and that and all. Yeah. So, as a tribute to the so-called Mumbaikars' resilience and whatnot, Mumbai spirit, I would like to recite a short parody. Go ahead. Which coincidentally I had written exactly 5 years back. 2018, on July 10th specifically, when there were heavy floods in Mumbai again, and Mumbai, 35 lives were lost, and there was a red alert not to step out of home, etc., etc. Okay, so this is for Mumbaikar spirit. Just give me Just give me 1 minute. Huh? Sure, no problem. Let me. I lost the page. I kept it open. The next one, who would like to speak, please raise your hand using the reaction button. That will be nice. Thank you. Oh my God. Okay. Anybody? Just a minute. I'm traveling, but can you hear me? Yeah, we can, but let Subramaniam Vishwanathan finish. I got the page. Okay. It's a short parody. So this is for the Mumbaikar spirit. Right. This is the original song is from Mother India, but this parody is more relates to Mother Mumbai. Okay. मुंबई में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मॉनसून है अगर टेरर तो सहना ही पड़ेगा। मुंबई में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मॉनसून है अगर टेरर तो सहना ही पड़ेगा।
गिर गिर के खड्डे में संभलते ही रहेंगे, पॉट होल से अगर डॉज कर चलते ही रहेंगे, गिर गिर के खड्डे में संभलते ही रहेंगे, पॉट होल से अगर डॉज कर चलते ही रहेंगे, फ्लड जिसने दिए, फ्लड जिसने दिए है वही फ्लड ड्रेन करेगा, फ्लड जिसने दिए है वही फ्लड ड्रेन करेगा, मुंबई में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मॉनसून है अगर टेरर तो सहना ही पड़ेगा, लोकल है, लोकल मीन्स लोकल ट्रेन, लोकल है वो जो स्टेशन के बीच रुकी है, प्लेटफॉर्म पर चढ़ना उतरना बिल्कुल असंभव है, जिंदा है जो, जिंदा है जो फुटबोर्ड से कभी स्लिप न करेगा, जिंदा है जो फुटबोर्ड से कभी स्लिप न करेगा, मुंबई में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मॉनसून है अगर टेरर तो सहना ही पड़ेगा। अच्छा, वन मोर अंतरा लास्ट। बीएमसी है, बीएमसी मीन्स बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या बीएमसी है तेरे साथ न डर खड्डे से तू है दिल, मेट्रो बनेगा बाद में अब जेल ले मुश्किल, डिग जिसने किए, डिग जिसने किया है कभी रिफिल भी करेगा, मुंबई में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मॉनसून है अगर टेरर तो सहना ही पड़ेगा। Thank you so much. Thank you so much. Lovely one, Nada. Just for the information of rest of the people, he is a specialist. He has a page of parody Kiya to Darna Kya on Facebook, where he continuously, any current topic, anything that happens, an immediate parody comes from his side. Excellent, very creative mind my friend has. So I'm very glad reunited after a very long many years, and now last 10 years we are all in very good touch, and then we have become one large family. Likewise, how seniors is now a one large family, Vasudhaiva Kutumbam. That is where we are heading. Thank you so much, Nata. Thank you, Lux. Thank you, Lux. Thank you, Lux. Yeah. Well, you are the inspiration. Shailaja ji, please go ahead. You are traveling, we can see that. No, we can't hear you. Your volume. No, we can't hear you. At least I can't hear. No. No, Shailaja ji, we cannot hear you at all. I cannot hear. I can't say about others. Can any of you show a thumbs down in case you are not able to hear? Sir, it's not audible, sir. We are not also hearing. Not audible, Shailaja ji. Can you try to unmute now and check? Okay. No, we can't. No change. No. शैलजा जी आप कुछ तो बोलिए. Let's see if we can hear. I think she is still muted, right? Hello. Yeah, can you hear me now? Yes, we Hello. do. Yeah, we can hear you. Yes. You can? All right. Very I nice. just wanted to share one negative and one positive memory. One was the horror of coming to VT station and seeing all the signboards blackened out, which means no train and don't know when the next one is coming, and an ocean of people. That was a real horror every monsoon.
at least 5 or 6 times. And then the next horror was when I used to live in Chembur at that time. And the next horror was when the train used to stop just ahead of Kurla station and the lights would go off. There would be water under our feet, everything blackout. You cannot jump out because you cannot see where you are going to land. And it's fair distance from where you are sitting in your ladies' compartment to the station platform. That was the second horror. And the beautiful memory that I have is we were on our way to our convocation for our graduation to receive our degrees, and it was raining so heavily. We were 3 friends, and we were at Leamington Road when the cab said broke down, and he said, "I can't go further." So on an impulse, I don't even know the name of the cinema hall. There was a cinema hall just where he had broken down. So we forgot all about the convocation, walked into the cinema hall, and we were all totally wet. We were totally wet. But we saw this big movie called Do Raaste, in which Rajesh Khanna and Mumtaz was there. You must have seen it in Whenever Opera House. I hear that song, must be. I don't remember. Yeah, The whole idea Dorasi was was in we just Opera wanted House. to, feel. Okay. I think it was in some CD theater on Lamington Road. But anyway, so whenever I hear that song, Bindiya Chamkegi, it has a totally different effect on me. But then the rains are so welcome whenever they come. With all these horrors, I think we all of us feel renewed and rejuvenated. I love the monsoon. That's all. Thank you. Thank you, Shailaja. Well put. Jayalakshmi ji has something to say. Go ahead, unmute yourself. Hello, sir. Good evening. Very good evening, everybody. Very good evening. So, Rim Jim Gire Good Sawan. evening. Everybody is very happy. So I am not an exception to it. Can you hear me, sir? Yeah, very well. So I love to drench in water, clean water, and make hot bhajis, varieties of bhajis, and feed everyone at home. And if any guest is there, for them also. Lovable season it is. Here I want to share my one of my personal experience and one work phase. My personal experience, it was a thrilling experience, though scary. We were traveling after a marriage to Alangudi, near in south side, Alangudi Guru Temple. We had to cross a wooden bridge pathway. It's a very narrow bridge. We were traveling along with our family friends also in a car. That was continuous rain was there, and the bridge was all overflowing with water, and the water level was up to the level of the car window. So none of us can get down and walk away also. And somehow the driver managed to move the car little bit, and we were able to cross the bridge and reach our destination. That was very scary because we don't know how depth is the water. So that was one experience. It was really thrilling, but all of us were making noises around. We don't know what to do. That was a real experience. Okay. Then, so that is one thing. And from the work front, I want to tell you. In 2000, in Hyderabad, there was incessant rain. City was flooded. And our branch, I was working in a bank. Our branch was somewhere close to Hussain Sagar Lake. All of you must have been yes, Hussain knowing Sagar. about it. So it was close to the lake. So during this flood season, the city was totally flooded. And because of this flood, the Hussain Sagar Lake was overflowing.
and the water flew into the cellar, everywhere. So in our branch, we had our locker for the customers in the cellar. Oh. So the previous night it was raining continuously. Next day when we went to office, we could see the cellar was flooded with water. And that day, even on the roads, we cannot go. Somehow we have managed to get into the office, but it was very difficult for any customers to come into the bank also, and we cannot leave out of the branch also. That was the situation that time. So all our staff, we were there inside the branch. We were thinking how to make arrangements for removing the water. So our manager arranged for a motor for pumping out the water. And unfortunately, the power was cut. So the motor was useless. So all our staff members, including the manager, all of us, one by one person took a mug, one person took the bucket. Each one of us were literally filling up the water from the cellar, and we were passing on, and we threw in the road, literally. And but as we are taking out the water, again still some water was coming. That was not receding only. So that was the situation. Almost that water level was up to the second line of the locker from the ground. Second line. So we were all worried what to do, how to contact the customer. That time the mobile usage was not that much. So we cannot contact the customers. They cannot come inside the branch also, if at all they come. That was the situation. Somehow we could manage and remove the water, and till 3 o'clock in the afternoon, we were all trying to take out the water, and each one of us, all gents and ladies, everybody, we removed the water from locker. And afterwards, when we got the current, we could use the motor and somehow manage the situation. So that was a really thrilling situation, irrespective of each different opinions of the staff members. All the staff members with cooperative efforts, we could manage the situation that day. That was really thrilling. That is very nice, very nice. Some experience that. So likewise, even now rain is there. In news also we can see so many places are flooded, and so many damage has happened to life as well as properties and other things. But our nation as a whole, if you see, our rescue force, defense force, many NGOs, they are doing excellent jobs. They are coming immediately to the rescue of the people and attending to the emergency. They are arranging for lifeboats to pick up the people from the flood-struck buildings, and they are picking up. They are making picking up people and making them travel to the other side of the flooded area. They are doing excellent job, and so that is really not only these organizations, even the people around our places, even though if they have any difference of opinion also, in case of emergency, they are always ready, and they come to their rescue. In Bombay and all, many people, they offer their flat, those who are in the top floor, they make them come and stay there till the water recedes. Yes, so that is the situation. They are doing excellent job. Rain is most welcome, but it should not be a damage to anybody's life. That's what, but we cannot do away with the Nature's Act. So we have to be prepared for any unforeseen situation. That's what I think. Sometimes our developmental activities ensures, that, we damage some of the environment, and it shows up sometimes somewhere, and it has a negative impact. I mean, today if we look at all the problems,
I mean, like Captain was saying that it was greenery and it was beautiful. Now everywhere there is construction. So we are creating our own issues with the nature. So होता है अभी क्या करें चलो there is only one person Veena Diwan who has not spoken I guess rest of the people have aired their views. Can I request Veena Diwan to unmute? No. Okay, so let me just sum up. My experience is very close to what my friend Nathan spoke about. He spoke about his children, but I was having a problem with my parents because even we were living in the United States at that time, and then we got to know of this. And my son, who was studying in Pune, he had driven down my parents to Thane, and then he went back to Pune. But that is where he was studying. So when it started flooding, and we live in the other side of western suburb, and my parents were stuck in my Masi's house, and they were on the ground floor. And with the flood coming in, they had, as Jayalakshmi ji said just now, people on the first floor and second floors were very magnanimous to have my parents upstairs. And imagine, my dad was 87 at that time, and mom 78. So these two moved from ground floor to first floor with whatever belongings, and it took a few days to recede, all the water to recede, and then, but life went on. I think that is again a speciality of Mumbai. As Nathan was saying, people just somehow managed to reach to their destinations. A lot of losses happened at that time, but then sitting in the US, we were worried as to, because there was no way we could communicate, phones were not functioning, all the, I think all the towers were all impacted, nobody was able to reach, and it was a nightmare for us, when we are sitting so remotely, ki kya ho raha hai. In his case, the children of 10 and probably younger kids, and mine was the other side, 78 and 87. So it was a challenge, but anyway, they saw it through, and it's not a very happy memory, but happy memories are only while school. When it used to rain and flood and there was no school, today there will be no school, you see the board and go home happy, listen to Vivid Bharati from 11 to 12:30 in the afternoon, again 2 o'clock to 3 o'clock. Those days were different, and we had a gala time as kids, playing in the rain. All kinds of games we have played in that season, whatever, Salia, whatnot. Anyway, it's wonderful listening to all of you, and thank you very much for being there. So we will meet again next week with another topic, which will hopefully be topical. So welcome again next week. So thank you very much. Thank you, seniors today, Archana and Firoz, who have been of great help to all of us. They have brought us together. And tomorrow is Wednesday. So Wednesday we have a 12 noon program, I think, which will be on holistic living or something to that effect by Dr. Bhuwana. Is there anything else, Firoz, in the evening? So tomorrow we have Karaoke Idol Group 1 performing. Okay. 6 o'clock. And morning we have Holistic by Dr. Bhavani Swaminathan, and she will be taking a musical exercise part 2. Oh, so tomorrow we should wear footwear and be ready. Yes, sir. Okay. Thank you so much, everybody. We'll see you again next week. Thank you. Bye. Good night. Thank you. Thank you, Lex.